शॉर्ट फिल्म है वो सबको अंदर बुलाओ शिल्पी रोहित जी इधर आइए ना पे था आया भाई The man behind the wheel smiles, a crooked smile. The man on the chair smiles. The man outside waits. Waits till the tears dry up. Waits till the flames shoot up. Waits till another transgender immigrates. For them, it is an indignation or there is fire. Death was too unrevealing in this poet's life, where people entangle me in their whims. Their voices sound like sweet like melodies, but their deeds is as ghastly as to see. Though I'm deprived by my own ones, there's still the sense of human remains. We have seen, never joined mirth. Why did we die by birth? Well, good evening, ladies and gentlemen. I'm Rohit Varma, your host tonight, and I welcome you all to the most emotional journey of being celebrating ourselves. When I talk about ourselves, it's not about the man, woman, he, she. We are celebrating love. You know. Now let me start asking a question from all of you. What love according to you is? Ma'am, will you tell me what love according to you is? It's something which can you can explore love, and love according to me is not only an expression, but it is something which is the most divine thing in this world. You can give love. Thank you very much. Very good. Zeba, do you think love has got any gender? Okay. Now my second question to all of you is, if you mix the 7 colors of the rainbow together in the color palette, what's the color do you get? If you mix the 7 colors of the rainbow in the color palette, what color you will get? I think the color of love. I think, of course, every color is mixed with. If you blend one color, it becomes one color, that is Safed. According, yes, it is Safed. Ma'am, you're very well read. Well, yes, the Safed. We are all talking about Safed today. Well, technically, I'm a very bold and unapologetic personality in front of you. I have never done the hosting in my life. This is my first experience. But during this journey, I got a very beautiful message from a dear friend. And I went for this beautiful screening of this movie, which really moved me completely. Not as me as a person, but my whole individuality, which left me speechless. I was so moved that I could not sleep for 2 days. Because each and everybody over here has gone through one kind of experience in life. Even I've gone through a lot in my life, coming from a technical background, from a very, very rich background where my father was German railways. When I came out of the closet in 1996, my family gave up on me. I was thrown out of my family, but my head was very high. I wanted to achieve certain things in my life. And for me, whatever hurdles came, I crossed that. And today I'm standing tall and talking in front of you with my pride and my dignity. So for me, I could relate to Safed. People over here, there's so many people, we discriminate between people.
he, she, bisexual, gay, lesbian. I think it doesn't matter whatever person's orientation is. What matters how one human connects to another human being. That's what I have learned from my life. That's what my Lord Krishna has always taught me. And then there's a beautiful, like, people started bombarding my WhatsApp messages with this trailers and beautiful messages, you know, from like, you know, from every corner where people were calling me and talking about this only movie which was Zee5, which really, without even knowing, I started promoting in the social media, and everybody would say, what Zee5 is all about? Zee5 is all about celebrating love, celebrating yourself, celebrating your individuality. Without wasting any time, I would like to talk about a documentary about this movie which I saw, which was very beautifully done by Mr. Samir Halim. Samir Halim. Mr. Samir Halim is here? Where is he? Samir. He's the man of the hour. You have no idea what you have given to the society. Samir, when this project came to you to do the documentary, what did you feel? What is your orientation? Are you gay, bisexual, or you are trisexual? Don't tell me you are straight. I am, but I am straight, but I am not like. I am open to anything. You experiment a lot of things in your life. I won't back out. You won't back out, but you respect everybody on this earth. So tell me about something about this documentary. You know, something when you did. What was going in your mind? You know, like what did you feel by during this journey? See, personally, what happened was I was never aware of transgenders or some other community. I was a normal human. I just graduated from college. I started working in films, and suddenly one day we started filming Zee5, and that was the experience. Like, I suddenly got to know a lot of transgenders, and secondly, they were very normal. They were normal than me. Like us. Yes, they were like, they were very open to me than I was open to them. So that opened my mind, that changed my mind, that oh shit, they need to speak out, and if they cannot, then I have to do something for them. So that is when I was friends with Salman, I was friends with the other transgenders on the set, and they made me feel friendly, and that is why I tried to take their story ahead and make a documentary. But as a person, did it move you as your individuality? You know, did it affected your soul, or you know, you could get connected to them emotionally? What really moved me was the ignorance, because everyone was aware of it. You are aware, I am aware. Everybody in this world are aware of the situation, are aware of these people. But the second part is they are ignorant about it. And that, yes, and that is what moved me. That why are they ignoring? You are aware, but you are at the same time ignoring. What is the problem in accepting that? You want yourself to be accepted, you do something, you want it to be accepted. If they are just being themselves, and you're trying to teach them that you're wrong. You're trying to tell them. One day they can stand up and tell you that you are wrong. What will you do then? They have the less majority. That is why you are not. You are able to pinpoint them. So yeah. You know, I wish you all the best, and you know, all the best. You keep on doing good work and give to the world the best. You, and the best will always come back to you. Okay? Now, before I talk about the man, you know, whom I'm seeing him socially, I never came close to him, and I will. Oh, your documentary is going to say, okay, sorry. Can you play it much? Isn't it heart touching? It moves us, yes. My heart is full. Now, before I call one man, I want to tell you about him. A couple of years back, I happened to see him in Sonu Nigam's house, and you know, I thought that he's been very रोहित जी थोड़ा सा आ गया Yeah, sure. आगे आ जाइए आप
I thought that he's a little judgmental, and I had my own opinion because I very carry a very strong aura, and gradually and emotionally I kept on seeing him in the social gatherings everywhere, and I was not knowing that he's so emotional, so deep, so beautiful, and a gorgeous human being when I connected with him. Okay, I came to know about his journey from the dark alleys of Muzaffarnagar to the escalators of Mumbai. His journey has been a roller coaster. He was an ice cream seller and struggled his life to become he touched so many people's heart that he became, I can say he's a rising son of India who is bringing up such an emotional and such a sensitive topic, that you need no introduction. I know you have done a couple of movies he's produced like Sarabjit, this goes on, Ram Leela, Gabbar, and I don't want to talk about this because I was so moved when I saw the movie Zee5 and he invited me with so much of love, and he gave me a call yesterday and he said, Rohit, I really want you to host this. The host is not my subject. I make people look good, but I could not say no to him because the sensitive subject he got to the society, which has moved me. I'm standing, leaving all our work. We are over here to support him. So without wasting any time, I would like to call on over here next to me the most incredible and the most beautiful human being whom I met recently, Sandeep. Please come over here. Thank you for bringing this up. Thank you for being so beautiful the way you are. Thank you for bringing the subject. When you were doing Zee5, how did this concept came in your mind, and why, you wanted to do a subject which was such a high-risk subject in the society? I have told this past in my interviews that actually I do still consider myself a newcomer in the industry because my father is not somebody who belongs to the industry, why even my mother. So when I thought of making a film, I was very sure nobody will give me a high-budgeted film. No big A-listers will work with me. So it's very important to realize who you are. And that's what this film, Zee5, is all about, who they are. That's what we have to realize. So I thought of this film, and I knew the subject itself is a star of this film. So I needed a good actor who can portray these characters to the audience in a very easy manner. So when I wrote this film, it was around 70 to 80 pages, and post that I made it to 30 pages. And when I narrated this film to a lot of people, they all with all their love and as a friend rejected this film, and nobody wanted to fund this film, and apart from that nobody wanted to act in this film. So I'm really grateful to people like Abhay and Meera and Chaya Kadam and Jamil Bhai and Barakhan. They all supported me, and but obvious Sameer and a lot of other people, Rahul, I took your name, darling, and Mansi, Tarun, yeah. So they all came together, and let me tell you, everybody worked in this film without any money. That was very important. That was very important. And I especially want to, and I especially want to thank today people who have actually understood and they have come to cover this, because this is the first press conference where I see very limited media. But trust me, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात कि जो लोग आए हैं वो लोग इस चीज़ को इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद. Thank you so much, and I will always remember these faces who have come from the media, and will always be grateful to this 5 people who are here. And Shilpi, I'm grateful to you because you are a sincere. You do a very sincere and great effort for each and everything you do. Thank you for making Zee5 and reach where it is. Thank you. Thank you very much. That was very beautifully said. But before I call this woman in front of you, I think more than the cast of the movie, this plays a very important role. Look, a director can write, and you can have a producer, can direct, you can write.
But if the kirdar is not very, like if they cannot do the kirdar properly, then the whole movie goes to the. So I think this woman, before I call on the stage, I see her eyes talks everything. Her opening scene, you know, when I was watching this documentary and you know, he sent me a link. The first shot of Kali Ma, you know, and when she's wearing a white sari, but your first shot for a movie, I think it was very heart touching. I could relate to her emotions. I think she's done a fab job. I think, you know, the whole expressions and everything what she delivered, I think is beyond expectation. So without wasting any time, I will call Meera Chopra over here, the most gorgeous, very ambitious and very, very beautifully talented actress. Tell me one thing, you know, when this Sandeep offered you this movie, which was, because a lot of people want commercial movies. They want you to do a commercial movie which is a very high budgeted and the kind of background you come from. And obviously you must be having a restriction. When you were reading the script, what was going on and how could you relate? Did you do the research on this? Did you do your homework? You did your workshop? Then how were you so perfect and 10 and 10 on this movie? मैं इस क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट बाद दूंगी. Right now I'm in a very different mood because we just did an interview 5 minutes back और सलमा ने ना एक बात बोली जो मैं अभी तक I'm not able to get over that कि हम लोग अधूरे हैं और जब कोई इंसान एक ऐसा वर्ड बोल देता है कि we are incomplete, I feel this is just so wrong because हम सबको भगवान ने पैदा किया है, हम सबको उन्होंने ज़िंदगी दी है और किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि they are incomplete and they are अधूरा. We all are complete in our true sense. So nobody should even think that कि वो लोग अधूरे पैदा हुए हैं. But I can understand when Salma and when everybody of them they think that they are incomplete because हम लोगों ने उनको ऐसा feel कराया है. मैं off topic चली हूँ 2 मिनट के लिए. हाँ मतलब मैं यहाँ डायरेक्टली कर. 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिससे हमारी पूरी सफेद की टीम बहुत अफेक्ट हुई थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जज ने एक सेम सेक्स की पेटिशन को उठा के फेंक दिया था और बोला था कि मैं ये इमोरल चीज़ें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ. और हम सब ने उसके बारे में ट्वीट किया था और जब मैंने ट्वीट किया था तो मेरे को ना कुछ कमेंट्स आए थे एंड दोज कमेंट्स हैड वर्ड्स लाइक faggots, मीठा, गुड़, छक्का और ये लोग नॉर्मल नहीं हैं. So, you know, we have become so insensitive and so बदतमीज to give words like these to certain section of society. आप लोगों ने क्या हमें कोई words दिए हैं ऐसे? आप लोगों ने हमें इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होना चाहिए क्योंकि हम उनको usually इन शब्दों से बुलाते हैं. But they have not given us any such words. So यहीं पे clear हो जाता है कि these people are such beautiful soul. और फिर हम बात करते हैं normal की कि ये लोग normal नहीं है. Normal कौन है? हम लोग normal हैं. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो 2-3 शादियाँ कर लेते और तब भी खुश नहीं रहते. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो अपने माँ बाप को छोड़ के उनका मुँह नहीं देखते. मैं कितने normal लोगों को देखती हूँ जो सारी रात लव पार्टी करते हैं और सारा दिन सोते हैं. वो लोग नॉर्मल है. सो मेरे को इस टाइम थोड़ा गुस्सा आया हुआ है कि हाउ हैव वी लेट दिस हैपन दैट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज लिविंग लाइक दैट. और सफेद इज जस्ट एन एफर्ट टू मेक देम फील वांटेड, टू मेक देम फील इक्वल एंड टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड लव दैट दे आर ऑल्सो लाइक अस, दे आर अस. सो ये जो इनडिफरेंस और इनइक्वालिटी है ना ये सीरियसली खत्म होनी चाहिए. संदीप ने एक एफर्ट लिया है, नहीं लेते लोग. जैसे उन्होंने बोला लोग सपोर्ट ही नहीं करते ऐसी चीज़ों को. बट आई थिंक हाई टाइम हमें करना चाहिए. 21st century everybody should live equally. Everybody. आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी. I'll come to that later on, but adding to this, you know, I want to represent all of you over here, ma'am. I would like to tell you something. Our strength has never come lifting the weight in the gym.
Our strength has come within our own self whenever life has knocked us down. Okay? And for me, life is not qualified by fluent English or a rich lifestyle or a branded clothes. Life is measured by the numbers of people smile after hearing our name. So I believe in that क्योंकि जब कुछ होता है, कुछ शुगर होता है, तो हम ही लोगों को बुलाते हैं दुआओं देने के लिए, हम ही लोगों से दुआएं लेते हैं. तो I think so. हम different नहीं हैं, आप सब different हैं. Isn't it, Mama? We all are very beautiful. मैं इन सब का दिल निकालूं, आप सब का दिल निकालूं और एक बैलेंस में रखूं और मैं बताऊं कि इसका दिल कौन सा है. तो I think इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा. So I think it's very emotional. We're not come to call someone else who is a very cute. I think जब वो उनके मम्मी के पेट के अंदर होंगे तो उन्होंने मम्मा ने क्या खाया होगा. I don't know क्या खाया था आपने जब आपके पेट में आपका बेटा था. Okay, he's a very cutest guy, very sweet. जो मैं सोच भी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इतनी ब्यूटीफुली अदा कर सकता है. Because it was not an easy job to play someone whom you are not. Okay? बहुत भारी भरकम ऐड किए हैं जब ये इंडस्ट्री में इन्होंने तहलका मचा दिया. इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं अमित खन्ना, जब इनकी पिक्चर उन्होंने खींची थी तो बाबा पूरे गे वर्ल्ड, स्ट्रेट नहीं पूरे गे वर्ल्ड में सेंसेशन हो गया था कि भैया ये लड़का है कौन. यू नो, कर्ली हेयर, very high fashion guy, priest of the goddess. He came from, I don't know from which angle, from which species of the earth he came over here. And obviously सारी queens ने लाइन मारा ही होगा इंडस्ट्री में. सब हम ही लोग तो डील करते हैं, हमारा तो बहुत सिंपल ना, पटे तो भैया, नहीं पटे तो सैया. Whatever. So मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. मैं बोलना चाहूँगा one of the most sweetest human being. उनकी मम्मी ने उनको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी. जब मेरे को आज भी याद है, मेरे को शुरू भैया का मिले थे, उन्होंने मेरे पैर छुए थे और उन्होंने बोला था मेरे से कि यू आर वेरी गॉर्जियस, वेरी प्रिटी. तब से मेरे वो बेटे की तरह हो गया, तो वो तो दिमाग से निकल ही गया वो सिस्टम. But I would like to call him the very talented, who's got a bright future. In fact, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि I think you both should get a national award for this. I think Abhay, come over here. And this is not you, this is your DNA inside your mother that you're so beautiful, so humble. What other First of all, thank you so much, everyone. नीचे होकर बैठना भाई. And sir, आपको शायद बोल रहे हैं तो आप नीचे होकर कोई बात नहीं, ये ऊपर आने की ही फिल्म है, नीचे जाने की नहीं. किसी की जगह नीचे गए तो मुझे ऊपर आ गए. But anyways, thank you so much. आप लोगों को देख के इतनी खुशी मिल रही है कि ये सफ़ेद जो है, जो हमारा था, वो लोगों तक पहुंच रहा है. And thank you so much, Rohit sir, for first of all inspiring us with your story. And I think जो लोग मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, I'm sorry to the right ones, but the left में बैठे, I think they are the most courageous people I've ever seen. और रोज़ निकलना अपना सर उठा के और दुनिया से लड़ते हुए, I think वो काबिल तारीफ बात है. तो एक बार खुद के लिए आप ज़रूर सुबह उठ के तालियां बजाएं कि हाँ, you are bringing the change और आप एक change का हिस्सा हैं. और साथ ही साथ अब मैं भी. और this brings me to a very common question जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों सफ़ेद, मतलब सफ़ेद क्यों, पहला काम और पहली फिल्म. तो ये फिल्म तो हमने देख ही ली है, जो Zee5 पे आ गई है. एंड जो वंडरफुली टैलेंटेड समीर अली, माय ब्रदर, जो आपने डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है, वो मेरे क्यों के सारे जवाब दे देते हैं. बिकॉज अगर आज के टाइम में अगर कोई ये इंसान सोच रहा है दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड दे चूज टू डाई ओवर लिविंग, आई थिंक वी हैव फेल्ड मोर देन एनीवन. एंड एज सर वी वर डिस्कसिंग, सर आल्सो सेड यस्टरडे, आई थिंक वी आर द वंस हु हैव मर्डर्ड देम एंड वी शुड बी पनिश्ड, नॉट देम. So that's the mindset and that's the thinking and that's what I live by, to treat everyone equally, which brings me to Salma. Salma, आपके बिना
सफेद हो ही नहीं सकता था, अगर सफेद हो भी जाता तो मैं चांदी नहीं हो सकता था। तो चांदी जितना आपसे प्यार करता है उतना शायद आप कोई भी नहीं करता होगा, बिकॉज अगर आप ना होते, आपने मेरे साथ वक्त ना बिताया होता। देखिए जब हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो पहली मुलाकात में खुशी की बातें तो सभी बोल देते हैं, लेकिन किसी के साथ, और स्पेशली सलमा जिनकी एक बहुत ही स्टोरी है, बैक स्टोरी है जो कि बहुत ही सॉरी बट सैडनिंग है, जिसको मैं खुशी में ऑफ कोर्स बदलना चाहूँगा, जो मैंने संकेत के थ्रू कोशिश भी की। बट पहली बार मिलने में खुशी की बात तो सभी कर देते हैं, लेकिन अपने दुख की बात कोई नहीं शेयर करता है। और वो उन्होंने अपना दिल मेरे लिए खोला, और ऐसा खोला कि मैं खुद ही खुल गया फिल्म में, और अच्छे से उसको निभा पाया। तो थैंक यू सो मच सलमा। एंड मेरे जो दो अनमोल रतन मेरे राइट पे खड़े, आई थिंक आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। सफ़ेद वाज नथिंग विदाउट यू ऑल। अगर आप काली नहीं होते, सर आप ना होते, नथिंग, कुछ भी ना था। एंड बस यही बोलना चाहूँगा एंड में कि ये जो भेदभाव की रीत है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। अब थोड़ा नई रीतों को आगे बढ़ाते हैं और ये पुरानी वाली रीत छोड़ देते हैं, ताकि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो निभाते हैं अच्छे से। एंड लेट्स लीव द डिफरेंशिएशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ड्रेस, लेट्स लीव इट देयर। थैंक यू। Thank you so much for beautiful, but I also want to thank each and every sport दादा, आपका जो मेकअप मैन होगा, डिजाइनर्स होंगे, एक पर्सन जिन्होंने आप ये किरदार निभाया, आपको हेल्प करी सफेद के लिए, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट दिया है हमारे इंडस्ट्री को, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और इससे पहले कि मैं एक और शख्स को बुलाऊँ, इनके बारे में एक शायरी में बोलना चाहूँगा कि इनका कहना है कि मुझसे नफरत करना है तो इरादों को मजबूत रखो, मुझसे नफरत करना है तो इरादों को मजबूत रखो, जरा सी चूक हो गई तो मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इनके बारे में, इनकी जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कुछ बातें इन्होंने कही जो मेरे को समझ में आई, कुछ बातें इन्होंने कही जो मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, यू नो, आई कम फ्रॉम वेरी लिटरेचर बैकग्राउंड, एंड मैंने जिंदगी हमेशा अपने शर्तों के हिसाब से जी है। मैंने आई हैव लिव्ड माय लाइफ विद माय टर्म्स, विद माय कंडीशन। सुसाइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सब के दिमाग में आता है, यू नो, हम इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं ना। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि हमारे जो लोग ऐसा, आई एम अ बाइपोलर, ओके, आई एम अ बाइपोलर, एंड लोग सोचते हैं व्हाट इज बाइपोलरिटी ऑल अबाउट। इस लोग से कहते हैं कि बट पीपल डोंट नो, इट्स अ मूड डिसऑर्डर, इट डजंट मीन। तो हर इंसान को उनकी खुशी पता है कि उनकी खुशी क्या है, उनका गम क्या है। अगर आप अपनी खुशियों को डिस्कवर कर ले कि आपको किसमें सुकून मिलता है, तो आई थिंक सुसाइड नाम का वर्ड आपके दिमाग पर, आपके जहन में नहीं आएगा। तो मैं सलमा को बुलाना चाहूँगा। सलमा, आई वुड लाइक यू टू कम ओवर हियर। यू आर बोल्ड, यू आर ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तो थोड़ा आपकी जर्नी का हमने देखी वहाँ पे, जो आपने बोला अपने बारे में, मे बी मेरे को पता है जिस शहर से आप आती हैं, मैं भी पैदा मैं इलाहाबाद में हुआ हूँ, brought up in Missouri, I'm from a very literature, like I said, from background. I understand जिस फैमिली को आप लगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमको, और क्या महसूस किया आपने जब आपने सफेद देखी। संदीप सर ने इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बताया, अपने जर्नी को बताइए, आपका अभी के साथ कैसा रहा, कैसे, इट्स वेरी टफ टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ थ्रू सम स्ट्रेंजर, बट आपने बहुत बोल्डनेस से बात किया, वी लाइक टू नो फ्रॉम यू। पहले तो मैं सभी मीडिया बंधु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे प्लीज़ कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी व्यक्ति का मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। कम्युनिटी का और संचालक महोदय का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, सफ़ेद मूवी जब से मैं बनारस से जब तक चली, तब से मैं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं। हम लोग 3-4 एक ग्रुप में सारे लोग मांगते एक घाट किनारे पहुंचे, थोड़ा सा सुकून लेने के लिए, कुछ जीवन उपार्जन के लिए हम लोग घाट में मांगने जाते हैं। उसी पीरियड में मुझे ये संदीप जी बैठे मिले, संदीप जी बैठे थे और मैंने कहा दो ना,
बाबूजी काशी में आए हो, बाबा की डिग्री में आए हो, दोनों। तो मुझे उन्होंने कुछ सेकंड तक उनको मैंने देखा, वो हमको देख रहे, तो उन्होंने बैठाया, बहुत इज्जत बहुत रिस्पेक्ट से बैठाया, मुझसे बातें की, मेरी सोच, अपनी सोच को मिलाया कि हम अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा मूवी बनाए क्या? हमने कहा ठीक है बनाए। तो फिर 1 साल बाद मैं अभय से मिली, अभय से बोली नहीं, अभय से बात किया। उस पीरियड के दौरान 1 साल बाद शमी जी मिले मुझे। समीर जी ने कहा कि हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं, क्या आपकी परमिशन है? हमने कहा बिल्कुल हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हैं। जिस फैमिली का साथ नहीं मिला, जो माँ बाप हमारे साथ नहीं रह पाए, जो हमारा समाज हमारे साथ नहीं है, वो व्यक्ति एक मोबाइल हाथ में लेके, कैमरा हाथ में लेके हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत गर्व की बात है। अरे अभी मेरे सर की छत नहीं है, मेरे पाँव में ठीक से चप्पल नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा फादर हो गया, मेरा फादर नहीं है। इन्होंने जाने की कोशिश की और सबसे ज्यादा मुझे यकीन नहीं था कि डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे तो अभय कर पाएगा, नामुमकिन था कि अभी कुछ भी कर पाएगा, ट्रांसजेंडर की रोल कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो पीड़ना, वो समाज कहाँ है? इनसे प्रेरणा लीजिए, संदीप सर से प्रेरणा लीजिए, वो ऐसे व्यक्ति है। अरे हमें कोई नहीं पूछने आता है, हमको संदीप सर पूछने आए, मूवी बनाने आए। कभी दोस्त फैमिली के साथ कभी नहीं बैठे, कभी हंसा बोला नहीं, और इनके साथ जैसे एक फैमिली जैसा महसूस हो, एक दोस्त जैसा हम फील कर पाए कि प्रेम ये लोग दे रहे हैं, मोहब्बत से बात कर रहे हैं हमसे, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमें तो सबने आधा छोड़ दिया, भगवान ने आधा छोड़ा, माता ने आधा छोड़ा, फादर ने आधा छोड़ा, समाज ने आधा छोड़ा, हमें कौन पूरा करेगा? मगर एक आस, एक प्रेरणा मिल गई इस सफेद से कि हम पूरे हो सकते हैं, पूरी हो जाएंगे। जब से मैंने मूवी देखा ना, अरे हिचड़ा है, छक्का है, मामू है, ये रियली समाज में चीजें हैं। हम कैसे जी पाएंगे, कैसे जीवन गुजारेंगे? दिन के उजालों में घूमते हैं, रात के अंधेरे में हम सोते नहीं, हमें नींद नहीं आती है, हमें रोना पड़ता है। वो माँ के साए के आंचल मुझे भी याद आते हैं, मेरी भी माँ की, माँ मुझे खाना दो, खुद को माँ बनना पड़ता है, खुद को फादर बनना पड़ता है, खुद को दोस्त बनना पड़ता है।